मैथमेटिक्स भय मुक्त भारत. Let our country be math phobia free. First of all, I would like to ask a question, not a question, just discussion. What makes the student to run away from sin 2a to sin a, cos 2a, cos square a minus sin square a, sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a? गलत तो नहीं है ना? All is okay? ddx of x degree pi upon 180. Am I right? Yes. गलत तो नहीं बोला ना? ddx of constant is 0, ddx of sin x is cos x, है ना? What makes the pupil to run away from this? Yes, actually mathematics is the king of all sciences. You know very well. Because एक्चुअली मैथमेटिक्स से क्या होता है कि जब पूरा माइंड हमारा कंसंट्रेट हो जाता है तो हमें कुछ भी बाहर की जो भी किसी भी तरह की आवाज़ें हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ भी हमें मीन सुनाई नहीं देती है जब हम पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो हमारा पूरा का पूरा माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट कर देता है. When we concentrate our mind properly, it means we can learn everything. Within second, we can learn physics, chemistry, any other subject if we want. Then we can get full marks in each and every subject. ठीक है सर? मैंने अभी बोला है कि रूल नंबर 1, whatever you will say is correct. Rule number 2, if you found wrong, say rule number 1. So you are always right, sir. Actually, what happened? I was coming to SHAIMROCK school. On the way, I planned to take some material before Doraha and Khanna ke between MacD drive-through. So I gave him 200 rupees and asked him to give this all. Then I found it is not good, and another 200 rupees also, means total how much I have given? 400 rupees. Am I right? How many? 200 plus? I did not like what he gave to me. I returned. I said, give me 500. Kada, sir, what do you mean by this? Mega, what is your qualification? Kada, sir, I have done BCom. And I know mathematics very well. Make it okay. Now, I said, give me a pen. And now you are all like him. And I am, right? So, a square minus b square. You see here on the board? Sir? No, मैं लिख रहा हूँ. I am your student here. A square minus b square. I am writing in the board. I said it is factorized by a plus b, a minus b. We are talking of the effective teaching. Correct? If a is equal to b, then a square minus a square equal to a plus a minus b. Fine. डांटोगे तो नहीं मैम? अच्छा, मेरे को गुस्सा आ रहा है. Now I take a common, a minus a, 2a, a minus a. This gets cancelled. 1 is equal to 2. Adding 3 on both sides. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे. हम वो हैं जो 2 और 2. मैंने कहा भाई साहब या तो गलती पकड़ो या 500 दो. अरे if a is equal to b, it is a logical step. If a is equal to b, hardly matters. एक ही बात है. You can make b equal to नहीं. See, if you make b equal to a equal to b, scalar है, that doesn't matter. I'll tell you what's the wrong here. See, a minus a is 0, a minus a is 0, 0 upon 0 कोई माई का लाल कोई माई की लाली आज तक बता नहीं सका. It is not defined.
Therefore, even zero is not defined. Zero is shunya, vacuum. Who is given zero, you know? Even India has given so many things. Because we people आपस में लड़ते रहे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से आ रही हैं. Copernicus says that planets revolve around the sun. Copernicus says that planets revolve around the sun. Kepler formulated all planets revolve nearly circular orbits with aerial velocity constant. But 6,000 before, Brahma, Murari, Tripurantari, Bhanu, Shashi, Bhumi, Sutosht, Buddhist, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु. 6000 साल पहले श्लोका में बताया गया है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सूरज के इर्द गिर्द ग्रह घूमते हैं. यू डोंट अप्रिशिएट योर कल्चर एंड यू आर नॉट प्राउड ऑफ दिस. आर यू? देन इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ दिस, हाउ यू कैन मेक योर स्टूडेंट्स टू बी प्राउड ऑफ यू? How you can make your school to be proud of you? Teachers, when you are going, अपनी कार के पीछे लिखो proud to be a teacher. चंडीगढ़ मेरी कार रोक ली, मेरे को बोलता आपने ये पीछे क्या लिखा हुआ है. मैं कहा चलान काट दे. मैं कहा I am spreading a message of education. I will tell Judge Saab. He doesn't want that India should study. He says, go please. So logic is what, dear teachers. First of all, आपके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए. You should create such natural instinct in you, which you have to deliver tomorrow in the class. If it is missing in you, you will go like a purana सिस्टम. जो आपने सर से पढ़ा, अपने टीचर से पढ़ा, वही आप प्ले कर दोगे. यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट जनरेशन. यू माइंड इट. यू टेल स्टूडेंट्स लाइक दिस. कैन यू टेक द हेल्प ऑफ द यंगेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स? कैन यू हेल्प मी? हेल्प मी. आई टेल स्टूडेंट्स कि यार I know you don't like halwa. I know you don't like halwa. I don't know you like puri. You know, like pasta. You like pizza. Okay, yes. Pizza comes in a square box. And you eat triangular. This is the life. दिखने में स्क्वायर है गोल खाते त्रिकोण. अब इस पिज्जा का सर थिकनेस है A. पिज्जा की थिकनेस क्या है? A. मोटाई. इसका रेडियस है Z. अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ? इसका वॉल्यूम हुआ पाई जेड स्क्वायर A. पाई जेड स्क्वायर एरिया, A थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम. कनफल हिंदी पंजाबी. What is this pi? This is ZA. How is it? So you teach students pizza is an example of mensuration. You teach sir mensuration. 1/3 pi r square is the volume of cone. 4/3 pi r cube the volume of sphere. Pi z square into a, या pi r square into a, the volume of plate. So when you create such things in the class, this is going to be an effective teaching. मैं ये नहीं कहता आप कल जाके ये बताओ. वो टीचर ही क्या जो मेरी बात माने, वो टीचर ही क्या जो मैनेजमेंट की बात सुने. बोलो जो मर्जी बोल दो, करना तो हमने अपनी मर्जी का, तभी तो हम विश्व गुरु हैं. That is also the definition of a teacher. Unless you don't create a teacher in you infallibly, English teachers of its own,
by natural instinct, then and only then you are the teacher, real teacher, a teacher by choice, otherwise a teacher by circumstances. Am I right, teachers? Now, आपने बोला confidence. How we can get confidence? You have to create activity. What happens in generally schools, we people have annual function. Am I right? Annual function में मदर टीचर्स ज़्यादा प्रेशर लाते हैं, आता है उनके ऊपर. पूरी की पूरी नर्सरी क्लास ही बटरफ्लाई बनकर नाच रही होती है. मुझे एक बंदा बोलता है यार इतना क्यों करते हैं? मैं कहा एक्चुअली द रोल ऑफ द स्कूल इज नॉट टू हाईलाइट वन स्टूडेंट. द रोल ऑफ स्कूल इज टू हाईलाइट एवरीबॉडी, टू गिव चांस एवरीबॉडी. उसमें भी पंगा है. मम्मी नाराज हो जाएगी कि मेरी बच्चे को पीछे खड़ा किया हुआ था जी. और एनुअल फंक्शन में जैसे ही आइटम खत्म हुई, पापा कार लेके बाहर खड़े, चलो. और लास्ट में जो चीफ गेस्ट है वो खाली अपने आप कोई भाषण दे रहा हो तो सब चले जाते हैं. होता है ना. इट हैपन्स एवरीवेयर, नॉट इन हियर और देयर, एवरीवेयर. व्हाई वी आर क्रिएटिंग दोज एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन? दैट इज रियली द शादी ऑफ द स्कूल मेरे अकॉर्डिंग. सो वी वांट टू infuse confidence, enthusiasm amongst the students. But you know, dear teachers, why annual function is celebrated annually? Throughout the year, you find who is good in what through your class. And then you note down and stealthily tell to the class teacher कि ये लड़की बड़ा अच्छा डांस करती है जी, कल इसने मेरी क्लास में. अब वो अगर लो माइंडेड है, इसका मतलब मैडम आप पढ़ाते नहीं है, फिर तुम डांस ही करवाते हो. You know, I told you, you may be blamed that your syllabus is slow. Now you can accelerate your syllabus pace using the concept of yes. You should have an extra classes on Sunday or Saturday. Now you will say, सर एक दिन होता है टीचर के सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर. सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियाँ सींचे खेत को तोता कुतरे आम. जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम. सो डियर टीचर्स, हमारे लिए कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे नहीं है. ए टीचर इज ऑलवेज ए टीचर. उसके दिमाग में बच्चे भूत की तरह घूमते रहते हैं. अच्छा ये प्रिंस अच्छा नहीं पढ़ रहा, हाउ आई कैन. एंड यू डिस्कस विद ईच अदर इन द स्टाफ रूम कि मैम आई एम नॉट गेटिंग दिस चाइल्ड वर्किंग इन माई क्लास, व्हाट अबाउट यू. मैम मेरे तो ठीक कर रहा है. Why I am not able to get it? मैम पता ही नहीं, मेरे तो होमवर्क भी नहीं हो रहा. तो when you discuss with each other, then you get an idea where you can improve yourself. Have you been to ever homeopathic doctor? He makes the history of your problems. Same way, you should have one personal diary or file and allot 2 pages to every student of your class. And you note down his behavior. Daily behavior. You will say school has already given, let it be with the school, but you should have your personal also. You will find daily you are getting new things to improve your teaching skills in class effectively. And it's not in any book. It's nowhere in any book. Nobody can teach you how to teach. I again say, it is mere formality that you have done B.Ed. Some people have done B.Ed without doing B.Ed also. Am I right? So logic is that, dear teachers, lot of things we learn. मेरे साथ एक line बोलेंगे. One learns through one's own observation. Percentage is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. Am I right? So, I have seen some students, they are not good
up to certain classes. After that, they are doing excellent. पंडित जी विल से कि पहले इसमें राहु की महादशा चल रही थी, अब बृहस्पति की दशा शुरू हुई है तो इसके रिजल्ट अच्छे आने ही आने हैं। अरे राहु बृहस्पति का तो पता नहीं है, अब ये सर का नाम उपेंद्र सर के पास पढ़ने लग गया तो इसकी दशा अच्छी हो गई है। अब ये पंजाबी में स्कोर कर रहा है तो ये शैमरॉक में आके पढ़ने लग गया तो इसके स्कोर अच्छे हो गए हैं। तो टीचर्स, यू हैव टू क्रिएट फॉर इफेक्टिव टीचिंग दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। Then and only then you will be having fan following, be it Instagram, be it Facebook, be it Spotify, be it YouTube. So you have to create that kind of things, and let me tell you, no resource person can be a source of such kind of a person who can resource such a person. Follow it? समझ आया? तो कोई भी रिसोर्स पर्सन आपको ऐसा पर्सन का सोर्स नहीं बना सकता। आप खुद ही अपने आप में इनफाइनाइट रिसोर्स पर्सन हो। Am I right? But you have to, I'll tell you, it's a reality example. When Hanumanji has to cross Samundar, Sagar, he forgets his power. तो उनको बैठा के बोलने लगे, कुछ याद करो अपना पवन सुत तो बालपन भी, तूने सूरज को अपने मुंह में डाल लिया था या वो सब। हनुमान जी को जोश आ गया, अब जा रहा हूं मैं, जय श्री राम। सेम इज द केस विद यू। आप में बहुत शक्तियां हैं, अपने आप को जगाओ। यू हैव गॉट एनॉर्मस पावर इन यू, बट डियर टीचर्स, वो दब गया है कहीं ना कहीं आपका टैलेंट। वो आटा गूंदने में, सब्जी काटने में, परोठा बनाने में, ब्रेकफास्ट तैयार करने में, पोछा लगाने में, कपड़े धोने में, इधर उधर की पॉलिटिक्स में, फैमिली पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपका रियल टैलेंट खत्म हो गया है। वो काम नहीं आएगा। इफ यू आर ए गुड टीचर, you can have for such activities you can hire so many things. The coming era is of technology. Only schools will survive. बाकी सब artificial intelligence will be overtaking. Schools will survive, and the coming era is of boarding school. Let me tell you, parents have no time. They want their children to be in the boarding school. So dear teachers, how you create it, write daily 10 minutes about yourself. My experience of the day, today that student hasn't behaved properly. Why? What can be the reason? Why I am not able to teach this topic well? मैंने पहले भी बोला है that हम टीचर में एक टीचर है, स्टूडेंट है, उसको हम पढ़ाते हैं. So mathematics, how you can improve in class of the students? Good afternoon. We're talking about maths, right? And Your subject. And how we can improve maths. This was your question? Yes. नहीं, एक general question है कि how will you make maths? How your name is? Sahil. How Sahil will be the real Sahil for the drowning students in math? डूबते हुए बच्चों के लिए साहिल कैसे साहिल? So basically, I will try to improve the confidence of the student, and that I will be doing by appreciating him. I would be giving easy questions. He will be solving himself, and then I'll appreciate him. Then, if you can do it, you can do harder as well. And that is how his confidence will be enhanced, and he would be able to solve the questions himself. Did you all understand what Honorable Sir said? Understand किया तो ताली बजानी है. Yes. आप भी मैथ्स पढ़ाते हैं मैम? Yes. Yes ma'am. So from easy to complex. From easy to Complex. x plus iota y. I mean complex number यही होता है ना सर? Minus 1 plus minus under root minus 3 upon वो वाला. Yes. 1 plus omega No, square. from the middle section, so we will firstly discuss the easy concepts. Then step by step we are going to do the difficult one. Okay. Means Firstly, we create the confidence among the students. They do the easy sums, then they will confident. Ki now we will do
The next one topics are जैसे कहते हैं ना भी मैथ्स के टीचर इतने कहीं खतरनाक होते हैं, बच्चों को बोलते हैं रेज योर राइट लेग, ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने लेफ्ट खड़ी कर दी, कहता दोनों टांगे किसने खड़ी की हैं ऊपर। सो कई बार क्या होता है कि बच्चों में, मैं मैडम एक चीज़ बताऊं आपको, मैथ्स सच बता रहा हूं, जो मर्जी बोलो आप, सिरदर्दी है। मानने वाली बात है। हैं जी। मानने वाली बात है ये। और मैथमेटिक्स में क्या है? नो सर, मैथमेटिक्स इज नॉट रद्दी, बिकॉज यही तो सब्जेक्ट है ऐसा कि जो कि सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इट इज़ सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, सारे गामा पादाने से सानी दपा मागरे सब बुरा नहीं है, हारमोनियम में सब कुछ है, लेकिन जिसको बजाना नहीं आता वो राट पाएगा। तो सब्जेक्ट बुरा नहीं है, बुरा नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन बजाने वाला पे डिपेंड करता है। यस, इट्स राइट। एम आई राइट? एम आई राइट? तो हमारे एक सर होते थे मैथ्स के, गांव में सरकारी स्कूल में, मिस्टर लक्ष्मण दास, उनकी एक मुछ कटी होती थी, तो मैंने उनका नाम भी रख दिया था लक्ष्मण दास MK, मुछ कटा। नाउ द लॉजिक इज दैट he was very strict. He first slaps, stand up, yes sir, a plus b whole cube, sir a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, चाटा, ये तो गलत है, a cube plus b cube 3ab into a plus b। मैं कहा सर खोल लो 3ab नु ब्रैकेट यही बनेगा, फाइन। अब सब लोग उसको विश कैसे करते थे? गुड मॉर्निंग सर, सर को हम बोले गुड मॉर्निंग सर, लाइक दिस, सत श्री अकाल सर, लाइक दिस, नमस्ते सर, लाइक सर, अस्सलाम वालेकुम सर, लाइक दिस। When our school was over, I asked the teacher, sir, our school is over now, मारोगे तो नहीं? Sir, why you say like this when we wish? First time I have seen smile and his teeth. कभी वो हंसे नहीं है। In Punjabi he said, do you think कि मैंने कोई विश करदा है? मैंने कहा जी I did not understand। पिंडा दा माहौल यू बेटर नो कैसा होता है, मास्टर जी गालियाँ भी निकालते हैं अच्छी अच्छी उस वक़्त, अब नहीं, अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी खूंखार अध्यापक, और शाम को 4-5 लोग बैठे होते हैं, ये बीजेपी का है टीचर, ये नहीं, ये उसका है, ये आम आदमी, ऐसे कहते तू की सोचता भी मनु कोई दिलों नमस्ते करता है। कहते बेसिकली, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बेसिकली मैनू सारे पता की बोलते हैं मास्टर जी थोड़ी भी, मास्टर जी तुसी मरो तुसी भी। सो लॉजिक इज वर्ड पीपल अब्यूज मी, और मैं बैक मारता हूं लाइक दिस, लाइक बगला मुखी के हवा नहीं होते ऐसे उल्टे, कहता मैं बैक मारता हूं, तेरे को भी वो गालियां मारते थे। So dear teachers, sometimes we people should be aware the lip language के बच्चा क्या गाली तो नहीं मार रहा,